A CNC machine manufacturer has grown his business by 145% in terms of profits in the last 2 years post lockdown. Another client of mine जिन्होंने अभी retail segment start किया है, he is focusing on profits from day one and creating magic in his business. क्या आप ये सोच रहे हैं कि इस पेंडेमिक के बीच में भी एक नॉन मेडिकल एसएमई इंडस्ट्री इतनी प्रॉफिटेबल कैसे हो सकती है? अगर आप भी अपने बिजनेस को दोबारा प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं या पेंडेमिक की वजह से आपका बिजनेस सर्वाइवल मोड में चल रहा है, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, एक शांत कॉर्नर ढूंढिए, एक पेन और पेपर लेके नोट्स लीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए. बट बिफोर दैट, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर कैश प्रॉफिट्स एंड ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स, then please make sure that you have subscribed to the channel and click the bell icon to ring the bell of profitability in your business. If there is someone whom you care about and if someone is going through a difficult time, then help them by sharing this video with them. I am CA Arsh Gaur, a profit coach on a mission to help India's SME business owners multiply their profits with simple yet highly effective tools. Today I will share about the 3 effective ways to increase profits in your business in 30 days. Yes, in just 30 days. Last week I was taking a review call with one of my clients and we were comparing the budgets with the actuals for the month of May. And हमने देखा कि हमने मई मंथ की हमारी budgeted sales achieve कर ली हैं, even when the country was badly hit by the lockdown. We were very happy. But when we got into the profit and loss account, there was a loss of 12 lakh rupees in the books. We were shocked to see how this can happen. Even after achieving the sales target, we are still at loss. क्या आपने कभी चेक किया कि आप बिजनेस में कुछ कमा भी रहे हो कि नहीं? हमने रियलाइज किया कि हमारे क्लाइंट की सेल्स टीम सेल्स तो कर रही है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ उस प्रोडक्ट पे है which is very easy to sell, but which has a gross profit margin of only 7%. And for him to create profits in his business, he should be focusing on selling the other products in his basket, which are giving a gross profit ranging from 20 to 25%. Now, this product-wise gross profit analysis is the first thing जो आपका profit बढ़ा देगी, even without a single rupee extra sales in your business. So to increase your profits in the next 30 days, sit for a whole day and do the product-wise gross profit analysis for your business and create a plan to focus on the high GP products this month. Now what happens in any business is जैसे जैसे हमारे business में sales बढ़ती रहती है, हम उस sales को sustain करने के लिए या और बढ़ाने के लिए हमारे खर्चे बढ़ाते रहते हैं. हमारे बिजनेस में हमारी सेल्स बढ़ने पे हम नए ऑफिस पे, फर्नीचर पे, मार्केटिंग पे, स्टाफ रिक्रूट करने पे और बहुत सारे खर्चे बढ़ा लेते हैं. अब बिजनेस में सेल्स चाहे सस्टेन कर ले चाहे कम हो जाए, एक बार जो एक्सपेंसेस का स्टैंडर्ड सेट हो गया भाई, वो कम नहीं होता. ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक बार जब हम एक्सपेंसेस सेट कर लें, उसके बाद हमारा माइंड उन्हें जस्टिफाई करने लग जाता है एंड वी स्टार्ट गिविंग रीजंस टू जस्टिफाई एंड मेंटेन दोज एक्सपेंसेस. यार मैं तो पहले ही पूरा खिंच खिंच के खर्चे कर रहे हैं यार, बिजनेस ग्रो करना है तो खर्चे तो पालने ही पड़ेंगे ना भाई. यार माई एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी एट द बेस्ट ऑप्टिमम लेवल्स. बट अगर मैं आपको कहूं दैट विद वन सिंगल क्वेश्चन you can actually reduce your expenses, would you like to know about it? And the question is this expense very crucial to my profits, or can I do away with it, or at least try and reduce it? हमें हमारा लेटेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे सामने रखना है और हर एक्सपेंस को देख के और एनालाइज करके ये क्वेश्चन पूछना है, क्या ये एक्सपेंस मेरे बिजनेस प्रॉफिट्स के लिए बहुत क्रूशियल है, या मैं इसको खत्म या कम कर सकता हूं. Be in an unbiased and honest state of mind while doing this exercise. क्योंकि मन हमेशा जस्टिफाई करना चाहेगा कि ये एक्सपेंस ऑप्टिमम है, बट इन an unbiased state मैजिक विल हैपन एंड यू विल गेट टू द एक्सपेंसेस जिन पे आप प्ले करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं इन द नेक्स्ट 30 days. Let's separate emotions from our business. Business is a science and it should never be done based on emotions. We get this done by devoting full sessions to this exercise with specific tools in our cash profit mastery course. And our participants have reduced up to 2 lakh a month by doing this with us. So the two tools discussed till now are G, gross profit analysis, and E, expense reduction. Now the next step which I am going to discuss, it will not only reduce your expenses, but will also give you a mountain of cash.
दैट इज declutter. हम हमारे बिजनेस ऑपरेशंस में और सेल्स बढ़ाने में इतने ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाते हैं कि हम कभी फोकस ही नहीं कर पाते दैट वेयर इज कैश स्टक इन माय बिजनेस. हम डिस्काउंट्स लेने के चक्कर में बल्क में परचेज कर लेते हैं और फिर स्टॉक पाइल अप होता रहता है. एंड देन वी जस्टिफाई इट विद आवर माइंड सेइंग दैट यार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गई यार, डिस्काउंट मिल गया यार. बट वी नेवर कैलकुलेट द इन्वेंट्री कॉस्ट इन आवर बिजनेस. Inventory is nothing but real cash in any business. So to declutter your business and also to increase your profits, plan a physical inventory check in your business this week. But there are some rules to it. Number 1, आप ये inventory calculation अपनी direct supervision में करवाओगे. Number 2, we would be focusing on finding the non-moving and obsolete goods in your business. अब अगर कोई स्टॉक्स आपके बिजनेस में 6 महीने में नहीं बिका या इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से ऑप्टिमम टाइम पे नहीं बिका, तो we will classify them as non-moving or obsolete goods and we will not let our mind give us justifications. Number 3 is we will create a plan to sell these non-moving and obsolete goods at whatever rate possible. Number 4, take action and sell the goods. Do not let your mind play with you. Number 5, use the cash created to reduce your debt or create cash reserves which will directly reduce your inventory cost, finance cost, and increase your profits. So just follow these 3 simple steps of GED, gross profit analysis, expense reduction, and declutter, and watch profits increase in your business. Let's plan this for the coming week and see magic happen in your business. If you want some hand-holding or want me to sit with you and work exclusively on your business, then please register for the masterclass I take in which we work on multiplying your cash profits. Please fill the form in the description box or send me a WhatsApp message on the number shown on the screen and my team will contact you. And if you like the video and you want me to keep coming up with such videos on tips to make your business profitable, then please click on the like button because it motivates me to keep making such videos for you. Thank you so much. Bye bye. Take care. Wish you a profitable week.